Hello and welcome. Welcome to learning session number 5 of chapter number 3 of geometry, which is circle. Okay. Our objective for today is going to be students will be able to solve problems based on inscribed angle theorem and intercepted arc. Okay. What are the two new topics we're going to learn today? Inscribed angle theorem and intercepted arc. So first, we'll understand what is the meaning of inscribed angle, what is the theorem based on inscribed angle, then what is the meaning of intercepted arc, and then after understanding all this we will start solving problems based on these two new topics uh, from our practice set. Okay, so this is an angle, right? We all know what angle is. Angle में एक point होता है और उस point में से दो rays निकलते हैं, right? And when you do that, when you originate two rays from a single point, it is called as an angle, right? What is this point called as? This point in red color, what is it called as? It is called as the vertex of the angle. Okay, जिस point से वो दो rays start होते हैं उसको हम vertex बोलते हैं, vertex of the angle. Next, what are these two rays called as? There's a special name for these two rays. These two rays are called as arms of the angle. Okay, in इस angle के दो हाथ होते हैं, ये जो rays हैं उनको हम हाथ बोलते हैं, arms of the angle. Okay, and also one more thing to notice is when you draw this angle of any page, the angle divides the page into two parts. Okay, one is the part inside the angle and the other is part outside the angle. Okay, so the part inside the angle we'll call as interior of the angle and part outside the angle we'll call as exterior of angle. Interior यानी inside, exterior यानी outside, right? So angle के अंदर के एरिया को हम interior of the angle बोलेंगे, angle के बाहर के एरिया को exterior of the angle बोलेंगे. Okay, so now that we know what are the different terms related to an angle, what is inscribed angle? What is inscribed angle? Okay, inscribed again, it means inside. Okay, but किसके inside होगा? What is the name of the chapter? The chapter's name is circle, right? तो circle के अंदर होगा. तो जो angle circle के अंदर होता है, circle के inside होता है, that angle is known as an inscribed angle. Okay. So, what is the definition of an inscribed angle? When the vertex of an angle lies on the circle. Okay, vertex any we had seen, right? The point from which the two rays originate. दो rays जिस point में से निकलते हैं, that is called as vertex. So here your angle is PDQ, right? Angle PDQ. That's the name of your angle. So what is the vertex? Vertex is point D. Is point D lying on the circle? Yes, you can see that point D is lying on the circle. So your first condition is met. Okay, but there is one more condition for inscribed angle. What is the second condition? And the arms of the angle intersect the circle at 2 points. So what are the arms of the angle? DP and DQ. These two are the arms of the angle. Are they intersecting the circle at 2 points? Yes. Arm DA is intersecting the circle at point A. Sorry, DP. The arm DP is intersecting the circle at point A, and arm DQ is intersecting the circle at point B. So दोनों arms circle को दो अलग-अलग points पे intersect कर रहे हैं, right? So the second condition is also met. Hence, it is called an inscribed angle. So angle PDQ or angle ADB, both of them are same. Both of them or this angle is going to be called as inscribed angle because it is inside the circle and it is satisfying two conditions. उसका vertex circle पे आ रहा है और उसके जो दो arms है वो circle को दो अलग-अलग points पे intersect कर रहा है. Hence it is an inscribed angle. Okay, so now we know what's an inscribed angle. Now let us look at intercepted arc. Okay, पिछला वाला inscribed angle था, ये intercepted arc है. Okay, we are talking about arcs now. And again we had seen what is arc. Arc is a curved shape of a circle. Okay, a curved part of a circle is known as an arc. Okay, so what is the definition? The arc of a circle that lies in the interior of the angle is an arc intercepted by that angle. Okay, तो अगर कोई भी arc किसी भी angle के interior में आ गए, we have seen what is the interior of angle, right? So if you see here arc AC, okay, arc AC, ये इस angle के interior में आ रहा है क्या? The answer is yes. So you will call or you will say that arc AC is intercepted by angle ABC. Okay, जब भी कोई arc एक angle के interior region में आ जाता है, then you call that arc as being intercepted by that angle. जिस angle के interior में आ रहा है उस angle से intercept हो गया, ऐसा बोल देते हैं. Okay, so you will say arc AC is intercepted by angle ABC. Okay, is angle ABC an inscribed angle?
द आंसर इज यस, उसका वर्टेक्स सर्कल पे है एंड उसके जो दो आर्म्स है सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एन इंस्क्राइब्ड एंगल, बट रेस्ट ऑफ देम आर नॉट इंस्क्राइब्ड एंगल, राइट. यहाँ पे वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, यहाँ पे भी वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, यहाँ पे भी वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, यहाँ पे भी वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है. सो for this and this, all the, I mean the last four circles, the vertex is not lying on the circle, right. इसलिए first condition ही meet नहीं हो रही है. So none of these four angles are inscribed angles. Okay. What about this? यहाँ पे vertex is lying on the circle and one of the arms is intersecting the circle, but is the other arm intersecting the circle? The answer is no. जो दूसरा आर्म है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल, बट इन सबके केसेस में इंटरसेप्टेड आर्क होगा. ओके. फॉर एग्जांपल, इज दिस आर्क लाइंग इन द इंटीजर ऑफ एंगल एबीसी? द आंसर इज यस. इज दिस आर्क लाइंग इन द इंटीजर ऑफ एंगल एबीसी? द आंसर इज यस. ओके. सो इन तीनों के केसेस में सिर्फ फर्स्ट वन इंस्क्राइब्ड एंगल है, बट इंटरसेप्टेड आर्क के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो एंगल हो इंस्क्राइब्ड एंगल ही होना चाहिए. ओके. एनी एंगल इज ओके. डेफिनेशन में क्या बोला है? सिर्फ यही बोला है कि वो जो आर्क है वो तुम्हारे एंगल के इंटीरियर में आना चाहिए. दिस अनदर कंडीशन एज वेल. व्हाट इज द अनदर कंडीशन? each side of the angle has to contain an end point of the arc. Okay. Each side of the angle has to contain an end point of the arc. इसका मतलब क्या हो गया? अब ये जो आर्क है, आर्क AC, उसका एंड पॉइंट क्या है? A point A is one end, point C. Okay, this is not point C. Let me call this as point X. Okay, यहाँ पे समझो point X है. So point A and point X, ये लोग दोनों इस आर्क के एंड पॉइंट्स है. पॉइंट ए जो एक एंड पॉइंट है वो एक आर्म पे लाई कर रहा है. पॉइंट एक्स जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हो, पॉइंट एक्स जो कि इस आर्क का दूसरा एंड है वो भी एंगल के दूसरे आर्म पे लाई कर रहा है. सो ईच साइड ऑफ द एंगल के जो दोनों आर्म्स है हैज टू कंटेन एन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क. जो एंगल्स के दो आर्म्स है उसके दोनों साइड्स पे आर्क का एक एक एंड आ जाना चाहिए. ओके. So what I was saying was, this is an inscribed angle, but these other angles are not inscribed angles. Okay. But even then they have intercepted arc. Intercepted arc के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे आर्क में, सॉरी या तुम्हारा जो आर्क है वो एंगल के इंटीरियर में आना चाहिए. That's it. So यहाँ पे this arc is in the interior of angle ABC. यहाँ पे this arc AC is in the interior of angle ABC. यहाँ पे दो आर्क्स है. ओके. इन द फर्स्ट रो ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड आर्क, बट हियर यू कैन फाइंड टू आर्क्स एज इंटरसेप्टेड आर्क. ओके. ये भी इंटरसेप्टेड आर्क है और ये भी इंटरसेप्टेड आर्क है. ओके. सो देयर आर टू इंटरसेप्टेड आर्क्स फॉर वन एंगल. फर्स्ट इंटरसेप्टेड आर्क एंड सेकंड इंटरसेप्टेड आर्क. ये दोनों आर्क्स उस एंगल के इंटीरियर में आ रहे हैं. सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव टू इंटरसेप्टेड आर्क्स. दिस इज योर फर्स्ट इंटरसेप्टेड आर्क एंड दिस इज योर सेकंड इंटरसेप्टेड आर्क. राइट. दोनों आर्क्स इस एंगल के इंटीरियर में आ रहा है. फाइनली हियर आल्सो यू कैन फाइंड टू इंटरसेप्टेड आर्क्स. हियर इज योर फर्स्ट intercepted arc and here is your second intercepted arc. Both of the arcs are in the interior of angle ABC. Okay. So first row में सिर्फ एक ही arc intercepted arc है, but in the second row all the angles have two arcs intercepted inside them. Okay. सब में दो intercepted arc है. Okay. And another thing to remember is intercepted arc के लिए angle inscribed होना compulsory नहीं है. Okay. So now we have also understood intercepted arc, यानी एंगल के इंटीरियर में जो कोई भी आर्क आ जाएगा that will be called as intercepted arc. Okay. Now let us move on to theorem. So what is the inscribed angle theorem? Okay. So the measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. Okay. इसका मतलब क्या है? You can see the diagram here. Here is your circle, which is your inscribed angle. Your inscribed angle is inscribed angle is angle ABC. I think here there's a printing mistake. Okay, this point should have come here. Okay, this point should have come here and not here नीचे. तो यहाँ पे जहाँ पे वो दोनों intersect हो रहे हैं point, ये जो आर्म है एंगल का और ये जो सर्कल है जहाँ पे intersect हो रहे हैं वहां पे ये point आना चाहिए था. Points here, not here. Okay, so just make a note of that. Okay, so which is our inscribed angle? Inscribed angle is angle ABC. Angle ABC है inscribed angle, क्योंकि ये दोनों conditions को satisfy कर रहा है. उसका vertex circle पे आ रहा है
और दोनों जो आर्म्स है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे यहाँ पे, पॉइंट सी पे यहाँ पे। ओके, पॉइंट सी यहाँ पे गलत शो किया, पॉइंट सी यहाँ पे आएगा। ओके, सो दिस इज योर इंस्क्राइब्ड एंगल। सो क्या बोला, मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, यानी एंगल एबीसी का जो मेजरमेंट होगा, इट इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय। अभी इस इंस्क्राइब्ड एंगल से कौन सा आर्क इंटरसेप्ट हुआ है, यानी इसके एंगल के इंटीरियर में कौन सा आर्क है, आर्क एडीसी। Okay, arc ADC is in the interior of angle ABC, right? So arc ADC intercepted arc हो गया angle ABC का। तो लोग बोल रहे हैं कि measure of inscribed angle, okay, measure of inscribed angle यानी measure of angle ABC। फिर is बोल रहे हैं, is यानी is equal to half, half यानी 1 divided by 2, of यानी multiplication। So I have not put any multiplication sign here because कोई sign नहीं, यानी वो we assumed it's multiplication, right? So of यानी multiplication of measure of, so m ब्रैकेट डाल दिया, measure यानी m ब्रैकेट of the arc intercepted by it। अभी इस एंगल ने कौन सा आर्क को इंटरसेप्ट किया, आर्क एडीसी, आर्क एडीसी को इंटरसेप्ट किया, राइट? अगेन आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट हियर शुड बी हियर, ओके? ये पॉइंट सी गलत रिप्रेजेंट किया, जहां पे वो आर्म और ये सर्कल मीट हो रहा है वहां पे पॉइंट सी आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जो कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल है उसके वो जो कोई भी आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, उसका जो हाफ मेजरमेंट होगा वो उस एंगल का मेजरमेंट होगा। ओके, दैट यू कैन सी हियर इन द equation form as well। okay, so you need to remember this is the inscribed angle theorem। जो कोई भी inscribed angle theorem होगा उसका measurement उसके intercepted arc का half हो जाएगा। okay, so we have understood inscribed angle theorem as well। let's move on। Corollaries of inscribed angle theorem। what is the meaning of corollary? corollary यानी अगर तुमने एक चीज बोल दी तो उसकी वजह से दूसरी और तीसरी चीज भी सच हो जाती है। okay, या फिर if you tell one statement, so because of that one statement some other statements also become true, those are known as corollaries। okay, corollaries। okay, so what is the first corollary of inscribed angle theorem? angles inscribed by the angles inscribed in the same arc are congruent। okay, so यहाँ पे देखो इस डायग्राम में एंगल PQR, एंगल PQR ने कौन से आर्क को इंटरसेप्ट किया, PTR। ओके, आर्क पीटीआर को एंगल पीक्यूआर ने इंटरसेप्ट किया। सिमिलरली सी दी अदर एंगल, एंगल पीएसआर। सो एंगल पीएसआर ने कौन सा आर्क को इंटरसेप्ट किया, उसने भी सेम आर्क को इंटरसेप्ट किया, पीटीआर। सो जो पीटीआर है ये दो एंगल्स का इंटरसेप्टेड आर्क है। ओके, एंगल पीक्यूआर का भी इंटरसेप्टेड आर्क है, एंगल पीएसआर का भी इंटरसेप्टेड आर्क है। सो बोल रहे हैं क्योंकि ये सेम आर्क से इंटरसेप्टेड है, राइट? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क यानी सेम आर्क उसके अंदर इंटरसेप्टेड है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो दे आर सेइंग दैट PQR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PSR। ओके, ये कैसे है, हमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से किसका कोरोलरी है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का कोरोलरी है, राइट? सो हाउ डिड वी फाइंड दिस फ्रॉम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का कोरोलरी, सॉरी हाउ डिड वी फाइंड दिस फ्रॉम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? लेट अस यूज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम फॉर बोथ दीज एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले PQR के लिए कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, मेजर ऑफ एंगल PQR विल बी हाफ ऑफ उसका आर्क PTR, राइट? क्योंकि ये जो आर्क PTR है वो इस एंगल्स के एंगल का इंटरसेप्ट है, राइट? सो उस आर्क का जो मेजरमेंट होगा उससे हाफ, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा। यू कैन अप्लाई द सेम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम फॉर द सेकंड एंगल नाउ। मेजर एंगल PSR, मेजर एंगल PSR यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो आर्क उसने इंटरसेप्ट किया है, पीटीआर आर्क को इंटरसेप्ट किया उस एंगल ने, तो सेम आर्क पीटीआर लिख दिया। सो इफ यू सी यहाँ पे भी राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में भी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पीटीआर, यहाँ पे भी राइट साइड पे हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पीटीआर। सो राइट साइड दोनों का सेम है। इफ RHS of two equations are equal, then LHS will also be equal। so ये जो LHS है वो भी इक्वल हो जाएगा, यानी क्या, एंगल PQR और एंगल PSR के मेजरमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल PQR एंड एंगल PSR बोथ विल हैव द सेम मेजरमेंट्स, क्योंकि दोनों सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। एंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम यूजिंग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम फॉर बोथ द एंगल्स। दोनों एंगल्स के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिख दोगे तो तुम्हें ये आ जाएगा, सिर्फ 2 स्टेप में आ जाएगा। ओके, so that is your first corollary। okay, let us move on to the second corollary। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब होता है दैट इज अ राइट एंगल। ओके, हाउ विल दैट कम फ्रॉम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? लेट अस सी। सो इफ यू सी
मेजर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी यहाँ पे है, सो मेजर ऑफ एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर्क ए एक्स सी, एंगल के इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ हो जाता है, राइट, एंगल का मेजरमेंट। सो एंगल एबीसी कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क ए एक्स सी, राइट, आर्क ए एक्स सी को इंटरसेप्ट कर रहा है। सो मेजर ऑफ एंगल ए एबीसी विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क ए एक्स सी, इजंट इट? बट आर्क ए एक्स सी क्या है, वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, राइट, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। सो ए एक्स सी इज हाफ अ सर्कल और सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल का आर्क का मेजरमेंट क्या होता है, सेमी सर्कल के आर्क का मेजरमेंट होता है 180 डिग्रीज। सो मेजर आर्क ए एक्स सी की जगह पे लिख दिया 180 डिग्रीज। अभी हाफ इंटू 180 क्या होता है, 90 डिग्रीज। सो एंगल एबीसी कितना हो गया, एंगल एबीसी, मेजर एंगल एबीसी बिकम्स 90 डिग्रीज। सो अगेन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को मैंने अगर सेमी सर्कुलर आर्क पे यूज किया तो मुझे मिल जाता है कि वो एंगल जो है 90 डिग्रीज ही होना चाहिए। सो अगेन वी यूज्ड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम टू गेट दिस सेकेंड स्टेटमेंट। इसका मतलब है कोरोलरी है, ओके, कि हम लोग कोई दूसरा थियरम यूज करके एक तीसरा थियरम बना रहे हैं, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोरोलरी। सो वी हैव सीन द सेकेंड कोरोलरी एज वेल, ओके। So all these things you need to remember, all these three things have been summarized in these 3 points, okay। first point क्या है, the measure of an inscribed angle is half the measure of the arc intercepted by it, okay। inscribed angle अगर कोई होगा और उसके अंदर कोई आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है तो उस एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ हो जाएगा, ओके। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 2, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो एंगल सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ओके, या फिर एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है तो वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। एंड फाइनली एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल इंस्क्राइब कर दिया तो राइट एंगल हो जाएगा, यानी उसका मेजरमेंट 90 डिग्रीज हो जाएगा। दैट आल्सो वी हैव सीन। So the second and the third one are the corollary of the first one. First one को अलग अलग conditions में use करोगे तो second and third statement मिल जाएगा, okay। So you need to remember these three statements. So now that we know what is an angle, what is an inscribed angle, what is an intercepted arc, and we have seen theorem of intercepted arc and its corollaries, now we are ready to solve problems based on these few things or these three statements given in a practice set, okay। So beginning with practice set 3.4, again like last time I would say, if you know the concept very well, the sums are very very easy, okay। The problems given in practice at 3.4 with respect to these three statements, they are very simple, they are mostly 3 to 4 line answers, and that too are very simple to think of। But inscribed angle क्या है, intercepted angle क्या है, ये सब concepts काफी clear होने चाहिए, only then you can solve these questions very easily, okay। So let us read the question first. In figure 3.56, here is a figure 3.56. In a circle with center O, here is your circle with center O. Length of chord AB is equal to the radius of the circle. Okay, ये जो chord है, chord AB, you know, you remember chord, right? What is a chord? It is a line joining two points on the circle. So point A और point B जो दोनों circle पे उनको join कर रहा है, so AB is a chord. Okay, so length of chord AB is equal to the radius. इसका जो length है वो radius के equal है. Okay, find the measure of each of the following. First angle AOB पूछा है, so angle AOB यहाँ पे है. So what will be that angle? Next angle ACB, एंगल ACB यहाँ पे है। सो अगर AOB मिल गया तो AOB से तुम आर्क AB का भी वैल्यू निकाल दोगे, बिकॉज सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो सेम मेजरमेंट उस आर्क का भी होता है, राइट। वी हैड सीन दिस इन द लास्ट लर्निंग सेशन। जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होगा वो सेम मेजरमेंट उस आर्क का होगा। सो एक बार सेंट्रल एंगल मिल गया तो तुम्हें आर्क का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। एक बार आर्क का मेजरमेंट मिल गया, उसका हाफ कर दो, तुम्हें ये एंगल मिल जाएगा यूजिंग inscribed angle theorem, right, क्योंकि inscribed angle है, angle ACB is the inscribed angle, okay। So ACB आ जाएगा। arc AB हम लोग वैसे भी ढूंढ रहे हैं, right, in the second step। next arc ACB कहाँ पे है, यहाँ पे arc ACB, ये पूरा arc। तो तुम्हें arc AB पता होगा तो उसको 360 में से माइनस कर दो, तुम्हें बचा हुआ arc का मेजरमेंट मिल जाएगा। So if you see all of them are easy, the only difficult thing or the thing which you have to think about is angle AOB। angle AOB कैसे मिलेगा? The only information you know is AB is equal to radius, okay। So think, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and think which approach will you take, which theorem will you use, which property will you use to get angle AOB। angle AOB, the only information you know is chord AB is equal to the radius। So how will you find angle AOB? It's very simple. If you really
pause the video and think even for 1 minute. I think you should get the answer. You will get the correct approach. So do pause the video here and think which approach, which property will you use. Okay. Okay, I hope you pause the video and have some idea. It's okay if you did not get the correct answer, okay? But it's important for you to practice thinking about approaches. अगर कोई ऐसा sum आ गया जो तुमने पहले कभी solve नहीं किया, it's very different. You should know, you should have the habit to think for yourself कि कौन सा property, कौन सा theorem use होने वाला है जिससे वो problem solve हो पाएगा. You've just seen, right? इस second, third और fourth वाला बहुत easily आ जाएगा तुम्हें angle AOB पता है. So angle AOB is the difficult part. Okay, I'm going to tell you how to find AOB. Okay, so AO क्या है? AO. See, AO is the radius of the circle. What is OB? OB is also the radius of the circle. So AOB radius है, OB भी radius है, and AB भी बोला equal to radius है. So ये तीनों sides जो है triangle के equal है, isn't it? क्योंकि AO radius है, BO भी radius है, and AB is also equal to radius. So ये तीनों radius के equal है. So this angle, this triangle has all three sides of it equal. Okay, so it is called as an equilateral triangle, isn't it? जिस भी ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. एंड यू नो दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं. सो कैन एक या दो लाइन में तुम लिख सकते हो कि एंगल AOB 60 डिग्री होगा. तुम्हें बस ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल, व्हिच इज वेरी इजी क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन में दे दिया. अभी AOB तुम्हें पता चल गया. ओके, ये 60 डिग्री है तो आर्क AB कितना होगा? आर्क AB भी 60 हो जाएगा, तो तुम्हें थर्ड वाला आ गया. नेक्स्ट एंगल ACB के साथ कैसे आएगा? ये 60 डिग्री है आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क 60 है, उसका हाफ कर दो तो तुम्हें इंस्क्राइब्ड एंगल का वैल्यू मिल जाएगा. तो 60 का हाफ ये 30 आ जाएगा. फिर आर्क ACB, अभी AB तुम्हें पता है 60 है तो ACB क्या होगा? 360 माइनस 60, तो 360 माइनस 60 विल बी 300. सो बिना सॉल्व किए, बिना पेन और पेपर यूज किए, वी हैव फाउंड द आंसर टू all these 4 questions. All of them are very simple questions. Now that you know how to solve and you know what the answers are, can you try to write this answer? Okay, because in geometry very often बहुत बार क्या होने वाला है, you will know how to solve the question, you will know what the correct answer is, you will find the correct answer, but you won't be able to write it in the correct format. So what I want you to do now is pause the video here and try to write the answers by yourself. तुम लोग को समझ गया solve कैसे करना है, but उसको लिखना कैसे वो I'm not sure. So try to write it by yourself in the correct format, the format which is expected in board. Important points on the left hand side, then reasons on the right hand side, and once you write it down, then we will discuss and you can cross check तुम लोग ने सही तरीके से लिखा है कि नहीं. Okay, and hence you will improve. We are here to improve so that we are ready for the board exam, right? Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and complete writing answers to all 4 questions. Okay. Okay, I hope you paused the video and have written answers to all 4 questions. Now, when I discuss it, you can cross-check if you have written it correctly or not. Okay, so we'll begin with the first part, जहाँ पे हमें AOB, angle AOB निकालना है. कैसे निकालेंगे? Triangle OAB को equilateral triangle बता के. Okay, so this is how the solution is going to look like. So first you say OA and OB, both of them are radius. Okay, and call that as equation 1. The reason will be radii of the same circle. वो लोग दोनों radius है same circle के, तो दोनों equal हो जाएंगे. Next, segment AB is equal to radius. Okay, segment AB भी radius के equal है. Why? It was given in the question and you call that as equation 2, right? So यहाँ पे RHS, ये दोनों equations का, okay, the first equation and the second equation दोनों के RHS equal है. दोनों के RHS यानी right hand side equal है, तो सबके उन दोनों के left hand side भी equal हो जाएंगे, right? So we will write seg OA equal to seg OB, इसको directly यहाँ पे copy कर दिया, is equal to seg AB. Okay, क्योंकि ये तीनों radius है. एंड इसका रीजन क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों का RHS सेम था इसलिए दोनों के LHS भी सेम हो जाएंगे. सो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB. तो इन तीनों को हमने इक्वल बता दिया. हेंस यू विल से ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इजंट इट? इसका भी तुम लोग ने अगर लिखा होगा रीजन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट वुड बी इवन बेटर. इट पुट्स अ बेटर इंप्रेशन ऑफ योर पेपर in front of the invigilator कि अच्छा इसका भी एक्स्ट्रा रीजन लिखा है. इसका रीजन क्या है? definition of an equilateral triangle क्या है कि सारे sides equal होते हैं. So I would have written the reason definition of an equilateral triangle over here. Okay, and then you know कि equilateral triangle के सारे angles 60 degrees होते हैं. So you'll write measure angle AOB is equal to 60 degrees, right? Why? Because it's an angle of an equilateral triangle. So you're done with first part of your question. Okay, first part question का हो गया. Next,
So for the second part, angle ACB, there are two ways to solve this question. Okay, the first way I explained at the beginning of the question. What will you do? You'll find the third part first. You know angle AOB is 60 degrees. उससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा? Arc AB is also equal to 60 degrees. उसका reason क्या होगा? Definition of minor arc. Because of the definition of minor arc, जो central angle का measurement होता है वही measurement उस arc का होता है. Okay, so you can find AB first and then use the property which says measure of the inscribed angle is half of the measure of its intercepted arc, right? उसको use कर सकते हो, या फिर the way they have done over here is अगर तुम्हें ये थर्ड पार्ट किए बिना डायरेक्टली सेकंड पार्ट ढूंढना है, ओके, या फिर सेकंड पार्ट का आंसर ढूंढना है, व्हाट यू विल से इज एंगल एसीबी जो तुम्हें पूछा है, ओके, एंगल एसीबी ये बड़ा वाला पार्ट या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल एओबी, एओबी यहाँ पे है, ओके। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसको बोल रहे हैं हाफ ऑफ मेजर एंगल एओबी। ये कहां से आया? दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी एंड उस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके। इसका मतलब क्या है? वो लोग किसकी, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल एसीबी। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है एक आर्क ने सबटेंड किया, कौन सा आर्क? एबी, एबी के ऊपर ये एंगल आ रहा है, ओके, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो वर्टेक्स है उस सर्कल के ऊपर आ रहा है, सो इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ द सर्कल। इज यानी इक्वल टू हाफ, हाफ यहाँ पे हो गया, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये जो सेम आर्क है, ये आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड किया है? द सेंट्रल एंगल। तो एंगल, सेंट्रल एंगल का नाम क्या है? एंगल एओबी, ओके। सो यू आइदर फाइंड द थर्ड पार्ट फर्स्ट, फाइंड AB is equal to 60 degree using definition of minor arc, and then you find angle ACB using inscribed angle theorem, or if you want to do it, if you want to do the second part first without doing the third part, you say ये जो inscribed angle है that is half of the angle, half of the measure of central angle, uh, central angle subtended by the same arc, okay. So you can use this property. So AOB कितना find out किया था हम लोग ने? 60 degrees, right? So AOB is 60 degrees, so half into 60 is 30, okay. कैसे भी solve करो आंसर 30 आएगा। So angle ACB we have got as angle 30 degrees, okay. So done with the second part also. Now for the third part, arc AB. So arc AB कैसे find out कर सकते हो? It's one line answer, okay. As I told you, measure of arc AB will be equal to measure of angle AOB। उसका जो central angle है उसका मेजरमेंट के इक्वल होगा उसका मेजरमेंट, राइट। आर्क का मेजरमेंट सेंट्रल एंगल के मेजरमेंट का इक्वल होगा। सो मेजर एंगल एओबी तो हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, वो है 60 डिग्री। उसका रीजन क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। इफ यू डू द थर्ड पार्ट फर्स्ट एंड देन यू डू द सेकंड पार्ट जिसमें एसीबी फाइंड आउट करना है, कैन सिंपली यूज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ओके। और फिर बाद में तुम लोग को इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा तुम लिखोगे मेजर एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एबी and the reason will be inscribed angle theorem। बस उतना लिख के ये काफी कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं if you do the third part first। So this is the third part, third part is a one line answer। last remaining is the fourth one, arc ACB, okay। arc ACB ये बड़ा वाला arc है, so arc ACB कैसे find out करेंगे? we'll first use arc addition property। क्या बोलोगे तुम? arc ACB, okay, arc ACB plus arc AB is equal to 360 डिग्री, राइट। आर्क एसीबी ये बड़ा वाला आर्क प्लस आर्क एबी ये छोटा वाला आर्क, दोनों को मिला के कितना होगा? 360 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ये दोनों को मिला के कंप्लीट सर्कल बन रहा है, एंड कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट और मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्रीज, राइट। या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल दिस आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, राइट। दोनों आर्क को ऐड करके कंप्लीट सर्कल बन रहा है, राइट, ओके। नाउ you want to find arc ACB, right? आर्क एसीबी का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, आर्क एबी का मेजरमेंट पता है, सो आर्क एबी को राइट हैंड साइड ले लो, सो इक्वल टू 360 वैसे के वैसे यहाँ पे प्लस मेजर ऑफ आर्क एबी, यहाँ पे जाके माइनस मेजर ऑफ आर्क एबी हो जाएगा, ओके। मेजर ऑफ आर्क एबी कितना है? 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 360 माइनस 60 इज 300, ओके। एंड ऑलवेज पुट द फाइनल आंसर इन पेंसिल बॉक्स, ओके। इसको पेंसिल बॉक्स में डालना है, इसको पेंसिल बॉक्स में डालना है। इन द प्रीवियस वन this you have to put in pencil box and this you have to put in pencil box, okay। the first one, second one, third one and fourth one, all of them should be in pencil box। rough diagram should be on the top right corner and all the reasons should be on the right hand side, neatly written, okay। only then you are successfully, you are able to then you can say you are success, then you will be able to say that
यू आर सक्सेसफुल इन राइटिंग द आंसर्स इन करेक्ट फॉर्मेट। आंसर्स तो हम लोग ने पहले ही देख लिए थे डिस्कस करके, लिखना कैसे ये सीखना चाहिए, और वो सीखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस डूइंग इट बाय योरसेल्फ। खुद से जब प्रैक्टिस करोगे लिखने का, एंड देन यू विल check what was the correct way of writing, then you are going to improve when you see your mistakes and improve on your mistakes. Okay, great. So we are done with the sum. We'll move on to the next one. We are moving on to the seventh sum. Okay, so in figure 3.60, here is figure 3.60. Okay, measure of ns कितना दिया है 125 degrees. Measure of arc ef यहाँ पे है, ef is given as 37 degrees. Then find the measure of arc nms यहाँ पे है. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एन इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए दो कंडीशंस होते हैं, उसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे होना चाहिए, और वो जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो जो आर्म्स है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट तो कर रहा है, बट द वर्टेक्स इज नॉट ऑन द सर्कल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज नहीं कर सकते तुम। व्हाई? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम सिर्फ इंस्क्राइब्ड एंगल्स के लिए है, व्हेयर दिस इज नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए तो वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्टेक्स सर्कल के ऊपर नहीं है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तुम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज नहीं कर सकते, देन हाउ विल यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल एनएमएस? एनएमएस का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान, अगर समझो इंस्क्राइब्ड एंगल होता यहाँ पे होता, सो इट इजीली यूज, राइट? उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क होता है उसका हाफ कर लो एंड यू विल गेट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। बट यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल है ही नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वाला ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, बट उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बट वी विल हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूला। नॉर्मल फॉर्मूला वो हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है। ओके, सो व्हाट विल बी द मॉडिफाइड फॉर्मूला? दिस विल बी द modified formula. First you say that ये जो chords है en and fs, okay, en is over here, fs is over here. Both these chords intersect externally at point m. बाहर जाके ये लोग मीट हो रहे हैं पॉइंट m पे, पहले ये बोल दो, and then the modified formula will look like this. Okay, angle nms क्या करोगे तुम? हाफ से तो मल्टीप्लाई करना है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? आर्क के मेजरमेंट को तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक आर्क होता था, बट यहाँ पे डायग्राम में यू कैन सी देयर आर टू इंटरसेप्टेड आर्क। एनएस भी इंटरसेप्टेड आर्क है और ईएफ भी इंटरसेप्टेड आर्क है, तो दो इंटरसेप्टेड आर्क्स है। तो क्या करोगे, वो जो बड़ा वाला इंटरसेप्टेड आर्क है उस यू विल सबट्रैक्ट द स्मॉलर इंटरसेप्टेड आर्क फ्रॉम इट। ओके, सो बड़ा वाला इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पे एनएस, बड़ा वाला जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और छोटा वाला जो है ईएफ उसको माइनस कर दिया। पहले ये माइनस कर दो बड़े से छोटे को आर्क में, एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय हाफ। ओके, सो दिस इज योर मॉडिफाइड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का फॉर्मूला व्हेन योर कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली। जब तुम्हारे जो कॉर्ड्स है वो बाहर जाके मीट हो जाए, तब तुम ये इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो उस फॉर्मूला को। ओके, सो इट इज आर्क एनएस। आर्क एनएस का वैल्यू दिया था 125 डिग्रीज, आर्क ईएफ का मेजरमेंट दिया था 37 degrees. So 125 minus 37 पहले कर दो. So 125 minus 37 is 88. Half multiplied by 88 is 44. So that is your final answer. So again, it was a one-line answer. Okay, one या two lines. At the most two lines में you can finish off this answer. The only difference was तुम्हें यहाँ पे ये notice करना था कि ये inscribed angle है नहीं, क्योंकि इसका vertex circle पे नहीं आ रहा है। तुम inscribed angle theorem नहीं यूज कर सकते, बट दूसरा और कोई चारा नहीं है। So what we'll do is we'll modify the inscribed angle theorem. So, जब भी कॉर्ड्स एक्सटर्नली मीट होते हैं, यू यूज द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम विद दिस मॉडिफिकेशन। एक आर्क के बजाय दो आर्क्स होंगे, सो बड़े वाले आर्क को छोटे वाले आर्क को बड़े वाले में से माइनस कर दो एंड फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल बी योर आंसर एंड पुट द फाइनल आंसर इन पेंसिल बॉक्स। ओके, नेक्स्ट 8th question. In figure 3.61, chords AC and D intersect at point B. Here is your chord AC. Here is your chord D. Okay, AC and D. Here are your two chords. They intersect at point B. Point B पे intersect कर रहे हो. This is not the center. काफी easily दिख रहा है कि ये point center में नहीं है. Okay. So if angle AB is equal to 108 degree, 108 degree. AB यहाँ पे है कि this angle they are saying as 108 degrees. Okay. Measure of arc AE is equal to 95 degrees. Okay. AE कहाँ पे है? यहाँ पे. ये जो आर्क है वो 95 डिग्रीज है, ये जो एंगल है वो 108 डिग्रीज है, राइट? बट जो कोई भी सेंट्रल एंगल होता है और ये जो कोई भी आर्क होता है उनका वैल्यू तो सेम होना चाहिए, राइट?
आर्क ए ही शुड बी इक्वल टू दिस एंगल. आर्क ए वो लोग बोल रहे हैं 95 और एंगल ए बी वो लोग बोल रहे हैं 108. ये अलग कैसे हुआ? द रीजन दे आर डिफरेंट इज पॉइंट बी सेंटर में नहीं है. पॉइंट बी अगर सेंटर में होता यहाँ पे तो ये जो आर्क है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होने चाहिए थे. बट क्योंकि पॉइंट बी सेंटर में नहीं है इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं होंगे. दिस एंगल एंड दिस आर्क वोंट बी इक्वल. ओके, सो हमें ये एंगल पता है, ये आर्क पता है, एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क डी सी. ये आर्क फाइंड आउट करना है. हाउ विल यू फाइंड इट आउट? अगेन माय क्वेश्चन इज एंगल ABE, एंगल ABE, राइट, ये एंगल, इज दिस एन इंस्क्राइब्ड एंगल? द आंसर इज नो, क्योंकि दो कंडीशंस होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए. द वर्टेक्स ऑफ द एंगल शुड बी ऑन द सर्कल. तो ये वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे है क्या? नहीं है. सो अगेन दिस इज नॉट इंस्क्राइब्ड एंगल. बट द ओनली थिंग वी कैन डू हियर इज यूज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. बट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज नहीं कर सकते कि इंस्क्राइब्ड एंगल है ही नहीं. सो अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज मेक अनदर मॉडिफिकेशन. वो जो फॉर्मूला है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का उसमें एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. ओके, सो इन द प्रीवियस केस द पॉइंट वाज एक्सटर्नल. whenever the point is external, सर्कल के बाहर होगा वर्टेक्स, तो तुम क्या मॉडिफाई करते हो? बड़े वाले आर्क को छोटे में से माइनस करके फिर हाफ से मल्टीप्लाई करते हो. बट यहाँ पे उल्टा है. द आर्क इज सॉरी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज इनसाइड द सर्कल. ओके, ये जो वर्टेक्स है एंगल का वो अंदर है. सो अभी सेम मॉडिफिकेशन काम नहीं करेगा. तो क्या मॉडिफाई करोगे? यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस साइन आएगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, सो दैट विल बी द मॉडिफिकेशन. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ. फर्स्ट से कॉर्ड्स AC एंड D इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट B. पिछले वाले में हम लोग ने एक्सटर्नली लिखा था क्योंकि वो बाहर मीट कर रहे थे दोनों कॉर्ड्स. बट यहाँ पे जो दो कॉर्ड्स है AC और D, AC इज ओवर हियर, D इज ओवर हियर, ये दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? इंटरनली, इनसाइड. इंटरनली यानी इनसाइड, दे आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल. ओके, कहाँ पे? एट पॉइंट B. सो क्या मॉडिफिकेशन करोगे तुम? यहाँ पे दोनों आर्क्स को ऐड कर दोगे. कौन से दोनों आर्क्स? यहाँ पे जो एंगल है उस ये दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट, एंगल ABE एंड एंगल DBC. सो दोनों एंगल्स में जो कोई भी इंटरसेप्टेड आर्क है वो दोनों को तुम ऐड कर दोगे. यहाँ पे आर्क AE इंटरसेप्टेड है, सो आर्क AE यहाँ पे आ गया, और पीछे आर्क DC इंटरसेक्टेड है, राइट, तो आर्क DC यहाँ पे ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया. सो जब भी whenever the vertex is inside the circle, then you add both the arcs and multiply by half. Whenever the vertex is outside the circle, you subtract both the arcs and multiply by half. That's the only difference. ये दो modifications तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे. Okay, so angle AB यहाँ पे है. Here they have written angle AB, right? So angle AB is equal to half multiplied by दोनों आर्क्स को ऐड कर दो. पहले एंगल AB कौन से आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है? AE को, तो AE प्लस उसके नीचे वाला कौन सा है? DC, तो DC को ऐड कर दो. AE और DC को ऐड कर दो. सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्मूला ऑफ इंटरसेप्टेड एंगल थ्योरम. ये इंटरसेप्टेड एंगल है, सॉरी इंटरसेप्टेड नहीं, इंस्क्राइब्ड. द मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइब्ड एंगल है ही नहीं, पर तुम्हें वही यूज करना पड़ेगा एक मॉडिफिकेशन के साथ. दो एंगल्स, दो आर्क्स इंस्क्राइब हुए, आर्क AE एंड आर्क D, दोनों को ऐड कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, नाउ इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन. एंगल AB का AE सॉरी एंगल ABE का क्या वैल्यू दिया था? एंगल ABE उसका वैल्यू दिया था 108 क्वेश्चन में, राइट. इफ आई गो बैक, एंगल AB 108 दिया था, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ को वैसे के वैसे. आर्क AE का क्या वैल्यू दिया था? 95 डिग्री. सो उसको 95 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो. एंड मेजर ऑफ आर्क DC ये पूछा है, राइट. measure of arc DC that has been asked in the question, so you keep it as it is. Okay, now you multiply, sorry, half यहाँ पे multiply, right, 2 is being divided on the right hand side, उसको left hand side लेके जाओगे तो multiply हो जाएगा. Whenever this number is divided on one side, if you take it on the other side, it will get multiplied. Okay, so 2 यहाँ पे divide हो जाता है, वहां पे जाके multiply, so 108 into 2 हो जाएगा. So what is 108 into 2? 108 into 2 is 216. Okay, so 216 को यहाँ पे लिख दिया, 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC को यहाँ पे लिख दिया. so यहाँ पे स्विच किया, 108 into 2 जो 216 आना चाहिए उसको राइट साइड में लिख दिया, एंड राइट साइड में यहाँ पे क्या लिखा था? 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया. अगेन व्हाट यू विल डू इज, तुम्हें मेजर ऑफ आर्क DC ढूंढना है, राइट. सो 95 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ. सो मेजर ऑफ आर्क DC यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था, इक्वल टू 216 ऑलरेडी लिखा था. यहाँ पे जो प्लस 95 डिग्रीज है वहां पे जाके माइनस 95 डिग्रीज हो जाएगा. ओके, so 216 minus 95 is 121. That's your required answer. Okay, measure of arc DC is 121 degrees, and you'll put this in pencil box. Okay, so we are also done with the eighth sum,
and this was the last sum for today. Okay, we only saw 3 sums. So the first sum was super easy. Okay, this sum was very easy. We could just solve it without using pen and paper. सिर्फ डायग्राम देके पूरा सम को सॉल्व कर दिया था. इसमें क्या सीखना था, तुम लोग लिख ठीक से पा रहे हो कि नहीं. ओके, सेकंड पॉइंट में, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन विच वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 7.3, देयर वाज नो इंटरसेप्टेड आर्क, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है वो सर्कल के बाहर जा रहा था. जब भी वर्टेक्स सर्कल के बाहर जा रहा है एंड यू हैव टू यूज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का फॉर्मूला, तो तुम हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, बट उससे पहले दोनों आर्क्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. यहाँ पे दो आर्क्स होंगे, एक बड़ा वाला आर्क और एक छोटा वाला आर्क. तो छोटे वाले आर्क को बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा. दैट वाज योर सेवेंथ सम. द लास्ट सम वाज अगेन, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, बट यू हैव टू यूज द इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला. पिछले वाले में ये जो वर्टेक्स से बाहर था, यहाँ पे वर्टेक्स अंदर आ गया. सो जैसे ही वर्टेक्स अंदर आ गया, तो कैसे मॉडिफाई करोगे फॉर्मूला को, यू विल ऐड द टू आर्क्स. ओके, यहाँ पे एक आर्क है ए और यहाँ पे नीचे एक आर्क है डी सी, दोनों को ऐड कर दो, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द एंगल ऑफ measure of angle ABE. Okay, and then you substitute. So that those two modifications you have to remember. External होगा वर्टेक्स, तो दोनों आर्क्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर इंटरनल होगा वर्टेक्स, तो दोनों आर्क्स को ऐड कर दो और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करके एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा. दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर. ओके, so just check whether you have achieved today's learning objective or not. Students will be able to solve problems based on inscribed angle theorem एंड इंटरसेप्टेड आर्क. सो अगर मैंने तुम लोग को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे कोई क्वेश्चन दे दिया या फिर इंटरसेप्टेड आर्क पे कोई क्वेश्चन दे दिया, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट, विल यू बी एबल टू मॉडिफाई इट इफ इट इज नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल. इंस्क्राइब्ड एंगल के यहाँ पे वो जो वर्टेक्स है बाहर चला गया, तो तुम मॉडिफाई कर पाओगे क्या? इंस्क्राइब्ड एंगल का जो पॉइंट है वर्टेक्स है, इंस्क्राइब्ड एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर होने के बजाय अंदर आ गया, देन विल यू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, विल यू बी एबल टू मॉडिफाई द formula? If your answer is yes, then you have achieved today's learning objective. Okay, so that's it for this learning objective and this learning session. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.